हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और हम आ गए हैं एक और एपिसोड के साथ नंबर्स एंड स्टार्स के। और ग्रीनस्टोन लोगो जो हमारे को इस सारी प्रेडिक्शन के बारे में बता रहे हैं वर्ल्ड कप की, इंडिया कैसे परफॉर्म करने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल का कितना चांसेस है, कौन से प्लेयर बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स होंगे जो बेहतरीन ढंग से इंडिया को एंकर करेंगे एक सक्सेसफुल कैंपेन के लिए, और बहुत कुछ। और आज मेरे साथ दोबारा जुड़ने जा रहे हैं लोगो और वो बताएंगे कि इंडिया का स्पेसिफिकली किस तरीके का कैंपेन होने जा रहा है 2023 वर्ल्ड कप का। तो स्वागत है ग्रीनस्टोन लोबो आपका एक और सेशन में, जो बहुत मज़ेदार सेशंस चल रहे हैं हमारे। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो बात करने में। तो मैं बात करूंगा, आपने बहुत कुछ बताया कि कैसे प्लेयर्स फेयर करने वाले हैं, कैसे क्या फाइनलिस्ट होने वाले हैं, क्या सेमीफाइनलिस्ट होने वाले हैं, लेकिन टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। आपने ये तो बता दिया कि फाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैसी रह सकती है, क्या कुछ कंसर्न्स होंगे, क्या कुछ हिकअप्स होंगे, कुछ किसी मैच में कहीं फंसेगी इंडिया, कितने मैचेस जीतेगी, वो सारी बातें करूंगा मैं इस एपिसोड में आपके साथ। तो शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। आप बताइए इंडिया कैसे फेयर करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा बात करते हैं। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे, इसलिए कि इंडिया फाइनल पहुंचेगा, ये सुनने में बहुत मजा आ रहा है। या आई नो, एक्चुअली एक स्टोरी की बात करेंगे हम लोग। जैसा मेस्सी की बात करते हैं तो मेस्सी के बारे में क्या आरोप लगा रहता था हमेशा। तो बोलते थे, अरे वो बार्सिलोना के लिए जब भी खेलते हैं ना तो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो उसके लिए ट्रॉफी के ऊपर ट्रॉफी लेकर आते हैं, बैलन डी ऑर लेकर आते हैं, लेकिन जब भी वो अपना देश के लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना के लिए, तो हार जाते हैं। तो ये बड़ा उनके ऊपर आरोप था बहुत हमेशा। तो मैंने लास्ट टाइम मतलब जो ये जो कोपा अमेरिका हुआ था, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो जीतेगा अर्जेंटीना। ओके, एंड देन उसके बाद जब वर्ल्ड कप आया था, तो उसमें भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अर्जेंटीना जीतेगा और वर्ल्ड कप फाइनल जीता। ठीक है, तो ये जो स्टोरी जो है ना, ये हम मेस्सी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 1987 बॉर्न है। उनका चार्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे रोहित शर्मा के। तो आप देखेंगे कि मतलब एग्जैक्टली सेम स्टोरी दोहरा रहे हैं हम। ओके, तो हम हमारे रोहित शर्मा साहब जो हैं वो मुंबई इंडियंस के लिए ट्रॉफी के ऊपर ट्रॉफी जीतते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, आईसीसी टूर्नामेंट कुछ नहीं जीते थे, तो उसके ऊपर उनके ऊपर इतना आरोप था कि सडनली आप एशिया कप लेकर आ गए वो। तो इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू कोपा अमेरिका, राइट? तो एशिया कप जीत लिया, अब उनके पास एक लास्ट आखिरी मौका है, एक बहुत बड़ा प्राइज, उससे भी बड़ा प्राइज जीतने का, और वो स्टोरी दोबारा हो सकता है जैसा मेस्सी के साथ हुआ, सेम थिंग रिपीट हो सकता है स्टोरी। सो दैट इज द स्टोरी, क्योंकि सेम सेट ऑफ प्लैनेट्स, 87 बॉर्न, almost Neptune in 10 degrees, Uranus in 25 degrees, planet Z and planet X in 10 degrees. It's an absolutely superb legendary chart set. Okay, so that is the reason he has got the highest chances to win. Okay, तो ये कहना, ये बता दिया। अभी लेट्स एनालाइज द टीम्स वन बाय वन। आप टीम बताइए, फिर हम लोग देखेंगे कि मतलब क्या चांसेस क्या। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल सकती है, क्या रह सकती है? स्टेडियम इंडिया चेन्नई में हो रहा है। सो ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम इज वेरी वीक, बहुत ही वल्नरेबल है इस टाइम पे। ओके, तो वो जो उनका जो प्लेयर्स है ना, वो दे आर ओकेश काइंड ऑफ चार्ट है, मतलब लेजेंडरी, वो जो लेजेंड्स जो है ना वो नहीं है। The kind of Australia we have seen in our younger age, that is yeah. So the 2003 मैं 2003 में काफी छोटा था। 2003 हार्ट ब्रेक में मैं I was young enough to cry for that World Cup fight. अच्छा, is it? Oh, that's very nice. That's very, हम लोग को और ज्यादा दर्द हुआ। ठीक है, कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देखते आ रहे हैं कि इतने सालों से वो मारते जा रहा है, हराते जा रहा है, So, लेकिन इस बार बहुत खुशी होगी क्योंकि very high chance that India will win against Australia and humble Australia, I would say. Okay. We have a better, I mean, we have like much better arsenal. Roughly, who can be that one guy or one bowler or batter, anyone who can be the match winner? Like होता है ना कि एकदम धागा ही खोल देगा। See, I would say if it is a bowler, it's going to be Jasprit Bumrah. Okay, and if it is going to be a batsman, it can be Gill or it can be KL Rahul. Okay. And coming to the second game, India-Afghanistan, which will be played in Delhi. Of course, अफगानिस्तान की ऑफ फील्ड राइवलरी, ऑफ फील्ड बातें ज़्यादा हैं इंडिया के साथ।
कंपैरिजन टू रिलेटिवली वीकर साइड है. आई वोंट से बहुत वीक साइड है, बट रिलेटिवली वीकर साइड है. सो कन्विंसिंगली जीतेंगे या कहीं वहाँ हिकअप आ सकता है? I don't think there's going to be any hiccup. In fact, it will be like match. हम आसानी से जीत लेंगे. हम इतना ज़्यादा हिकअप नहीं आएगा. Team is okay. I mean, like they have a captain who's 94 born. It's not a bad team. आपने जैसे कहा कि मतलब it's a बनाना पील टीम है वो, ठीक है, तो स्लिप हो सकते हैं. बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान दोनों ऐसे टीम्स होते हैं. But we are not going to slip up like what West Indies slipped against Bangladesh. ऐसा सब नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा. And see, it's very difficult to say who will be the man of the match or something, because हो सकता है कि पहले 20 ओवर में मैच खत्म हो जाए ना, उस तरीके से भी हो सकता है. So it's going to be a one-sided affair is what I would say. इतना ज़्यादा. Another convincing 2-2 it would be for India. Convincing win. तीसरा मैच इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में टोटली डिफरेंट तरीके से बात करता हूँ. उसके बारे में हम बात करते आए हैं, तो वो साइड रखेंगे. उसके बाद के जो मैचेस हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ये कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एज पर द मोमेंटम एंड परफॉर्मेंस इज कंसर्न. इनफैक्ट अगेन क्योंकि बांग्लादेश ने हमें हराया है एशिया कप में, एशिया कप के मैच में, एंड रोहित शर्मा will be the captain. He has a much more superior chart compared to Shakib Al Hasan. So I would say that India will win for sure. वो थोड़ा tense moments यहाँ होंगे, but then Australia is going to be more tougher. Okay, but compared to that, I would say that India will be more convincingly win against Bangladesh. Okay. Again, it will be not. I mean, like maybe one-sided affair नहीं बोल सकते, but then it will be a good contest and India will win it. Easy win. Convincing, comprehensive. Convincing, easy win. Yes. And then comes the nightmare team for India. जो ICC tournament में जो कहते हैं ना रोड़ा बनी हुई हमारे जीतने में, the New Zealand, the Kiwis, humble off the field, very humble, even on the field, but they never let us win. So, उस मैच के बारे में क्या कहना चाहते हो? Yeah. So last time we lost against them, right? Yeah. Last time we lost against them, and I was feeling so bad to say that India is going to lose against New Zealand, but I would say that India will definitely win against New Zealand this time. It's like New Zealand is time mein na, every time they punch above their weight, but this time they won't be able to punch above their weight, and New Zealand is going to lose to many teams. So one of the teams that they will lose to will be India. So I would say that it may be a good fight, but then finally India will come up the winners. कोई दो राय नहीं. Okay. So easy win you say, और थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा ज़्यादा. थोड़ा सा फाइट होगा, but finally we have more match winners. We have more, I mean, World Cup winning match winners. So who will rise up to the occasion, and we'll beat them. So I think it will be more of a ballers winning the match for us. This New Zealand match. Okay. In the New Zealand. And that needs, we need that because थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंबल करती है बैटिंग यूनिट हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ. एंड देन लोगो द इंग्लैंड टीम, मैं इंग्लैंड पे इसलिए जोर ज़्यादा देता हूँ क्योंकि जो लास्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2011 वर्ल्ड कप हुआ था, मैच हुआ था, दैट वाज अ टाई. एंड मतलब वो क्या मैच था. 600 से ज़्यादा रन, विकेटें गिर रही हैं, स्पिनर्स रन्स दे रहे हैं. आई मीन एवरीथिंग, दैट इज एवरीथिंग. सो इस बार क्या होने वाला स्पेसिफिकली उस गेम? Yeah, so I would say that I will talk about this England team. See, England के साथ जो मैच जो होने वाला है, this is going to be a very tough match. Okay, probably this will be the toughest match for India, क्योंकि उसके जो players हैं, the phenomenal, the individual, अगर हम players एक एक करके देखेंगे तो they have like extraordinary top line to, I mean they have so many all rounders. I mean, this is from cricketing team. उनका जो चार्ट अगर हम देखेंगे ना, मतलब जितना सारा strategically 1990 born इतने सारे players हैं. So it is a very very tough team. हो सकता है कि हम हार भी जाएं. Okay. We may even lose the match. Okay. And but if we lose against England, it is not going to impact the overall. I mean, we'll reach the semi-finals. Okay. Yeah. Campaign is not going to be impacted. It is possible that we may. I mean, you don't know because क्या होता है कि इसमें individual charts की जरूरत पड़ती है. जोस बटलर का exact time of birth मेरे पास नहीं है. But सिर्फ मैं date of birth रख के देखता हूँ तो it's a 50-50. You can't really say who will win. Okay. So in that case,
I would, as an Indian, I would say यार इंडिया जीतेगा, but you know इंडिया जीतना चाहिए, but even if we lose, I won't be surprised. Okay, but I'll be okay with losing against India, against England. मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह पे कुछ ना कुछ अगर हो जाता है, एक मैच अगर हमें हारना ही है तो इट्स ओके, वी लूज दैट, बट देन फाइनली व्हेन वी कम अगेंस्ट इंग्लैंड अगेन, अगर मान लो कि इंग्लैंड के साथ अगर हम दोबारा वापस आएंगे ना, विल डेफिनेटली बीट देम. So, जहाँ पर क्रंच मैच होता है ना, जहाँ पर सेमीफाइनल्स में जो इम्पोर्टेंट है या फाइनल में अगर हमें मिल रहे हैं उनको, तो we'll definitely beat them. So it's okay if we lose against England in the initial matches. So it's fine. So नजर उतर जाएगी basically, as you say. As you put it. Going to Sri Lanka's game. I guess we beat them relatively. इतना आसानी से नहीं जैसा एशिया कप फाइनल में करा. नहीं. It won't be like that. क्योंकि वो उनके कुछ मैच विनर्स नहीं थे. But see, Darshan Chanaka is like, unfortunately, doesn't have a good chart. So उनके पास और भी अच्छे, I mean they don't, Sri Lanka doesn't have any players at all जो अच्छे players आज की तारीख में, एक दो कुछ खिलाड़ी हैं जो IPL में खेलते हैं, they are very good, but other than that, as a team, it's not a strong team. उनका coach भी weak coach है, so it'll be an easy one. Look, just digressing a bit, does the Joshi number also put that impact? I'm not a numbers person, okay, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो अलग होता है, एस्ट्रोलॉजी वो अलग होता है. मैं प्लैनेट्स को देखता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी में क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं उसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट आई वुड से दैट सी नंबर्स डोंट रियली चेंज अल्टर द पर्सनस डेस्टिनी. लेकिन अगर आप मान लो कि वो जर्सी नंबर आपको आया है जो वक्त पे आया है, अगर वो वक्त सही वक्त है, तो देन दैट मींस यू आर गोइंग टू डू वेल. सो मेनी टाइम्स इट्स अबाउट दोनों मैच होना चाहिए, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द व्हाटएवर इज हैपनिंग, लेकिन वो कौन से वक्त पे, और अगर आप शादी कर रहे हैं तो कौन से वक्त पे शादी कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि शादी कैसा रहेगा, इट्स लाइक दैट. सो आप जर्सी पहन के रहे हैं तो व्हेन डिड यू वेयर इट, दैट मैटर्स. ओके. And what about the South Africa game, the Proteas? Because again, 2011 we lost to them in the league stage. 2011 we lost them. This I would say that it's going to be again a very very tough match. But by the end of it all, it's also their coach is like a weak coach compared to our coach. Rahul Dravid has got. हम लोग राहुल द्रविड़ की बात ही नहीं की हम लोगों ने अभी. So I would say that Rahul Dravid has got a. I need to say this, boss. ये बताना बहुत जरूरी है कि राहुल द्रविड़ के बारे में. See, अगर हम इंडिया की जो ग्रेट्स हैं, if you look at सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया, so the greatest recognition जो किसी को भी मिल सकता है, अगर आप भारतीय हैं तो वो भारत रत्न वो मिल गया है. If we talk about सौरव गांगुली, वो तो BCCI के प्रेसिडेंट बन गए. ओके, सो वो जो वहां पर जो एक और जो महान एक खिलाड़ी जो थे, that guy is राहुल द्रविड़. The silent man, बहुत ज्यादा पॉम्पस नहीं है, वो कुछ शोशा नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, हम्बल गाय, यूज्ड टू बी अ टीम मैन, हमेशा जाके वो टीम के लिए वो अपना पूरा जान दाव पे लगा देते थे. सो दैट गाय अनसंग हीरो, लाइक आई वुड से, नहीं, बट स्टिल पीपल सिंग हिज सॉन्ग्स, बट देन स्टिल जितना उनको जो मिलना चाहिए था, वो इवन एस्ट्रोलॉजिकली मैं कहूंगा कि वो उनको कीर्ति नहीं मिला है. He was a captain, he was a okay captain, okay, but as a player he couldn't win a World Cup, okay. At least Tendulkar has won a World Cup, okay, and Ganguly as a captain, उन्होंने बहुत कुछ कीर्ति किया है. So 2001 Australia again, against Australia, so lot of things, final frontier, so many things, but Rahul Dravid as a coach has never done anything great. लेकिन उनका भी चार्ट इतना ही पावरफुल है, उनका चार्ट like a Tendulkar, like a विराट कोहली, लेकिन उनका इंटरेस्टिंग भी है कि उनका शनि जो है ना इतना पावरफुल है, वो उनका कोचिंग करियर को इंडिकेट करता है. ओके, एंड द प्लैनेट कोचिंग, शनि जो है जो उनका बहुत पावरफुल प्लैनेट है. सो ही इज लाइक ज़िनेडिन ज़िडेन, जो ज़िनेडिन ज़िडेन जो एज अ प्लेयर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एज अ कोच उन्होंने लगातार 3 चैंपियंस लीग जीता है. वैसे ही है राहुल द्रविड़ का. सो ही हैज सच अ फिनोमिनल चार्ट. His chart is also very important. His chart will help us win a lot of matches. Okay, he has just won as a coach. He has only won one major thing is like under 20 का World Cup जीता है, under 19 World Cup, sorry, under 19 World Cup का जीता है उन्होंने. That is the only thing. But उससे भी बड़ा कुछ करना चाहिए उनको. And now his combination with Rohit Sharma is phenomenal. And I would say that that coach from, if I'm looking at this South Africa and India का team जो है इतना equal है, इतना strongly equal है. लेकिन one differentiating factor is the coach. Our coach, our coach Horoscope is definitely much better than their coach. So that is one reason I feel that
फाइनली भले जितना भी स्ट्रांग होगा वो मैच, टफ होगा वो मैच, लेकिन इंडिया विल कम आउट द विनर्स। You just mentioned it ना, अभी मेरे को स्ट्राइक हुआ कि as captain we lost the 2007 World Cup very, मतलब we were knocked out very in a very bad way. But 2016 India, the under 19 team, the Ishan Kishan led team, they went to the finals, they lost the finals. The 2018 team, Prithvi Shaw won, they won the World Cup, and he was a coach in both of them. So if you are also, reaching 2 finals on the trot, that's a different task. I mean, that's a great task. So yeah, that way is, it just struck me here. Yeah. तो ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका में प्लेयर्स नहीं, कोच जिताएगा। एंड देन नेदरलैंड्स में ठीक है, वो तो जीत तो जाएंगे, बट एक बार थोड़ा सा हिकअप दिया था नेदरलैंड्स ने भी, अगर आपको याद हो 2003, जिसमें बहुत सारा मौका गया था, तो 204 भी वो बंडल्ड आउट एंड थोड़ा हो गया था वहाँ पे। उसके बाद रिगार्डिंग नाउ अभी ये आईपीएल का मतलब बहुत ज्यादा आने के बाद में ना, ऑल प्लेयर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एनी टीम कैन बीट यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो इतना लाइटली नहीं लेंगे किसी को भी। सो आई एम श्योर नेदरलैंड्स को भी लोग लाइटली नहीं लेने वाले। इट्स गोइंग टू बी गुड मैच, बट देन इंडिया विल वन साइडेड मैच ही होगा, इंडिया विल विन वेरी इजी। आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। और ये सारे मैचेस के दौरान कोई ऐसा प्लेयर बारिंग आपने केएल राहुल का नाम भी लिया है, बुमराह का नाम लिया, इनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है जैसे जो बड़े नाम है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर दे गोना डू एनीथिंग मिराकुलस, जैसे विराट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ चांस है, या उतने की जरूरत पड़ेगी नहीं? या एब्सोल्युटली। सो सी ये तीनों जो प्लेयर है, गिल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये तीनों आर गोइंग टू प्ले सम phenomenal matches which they will win on their own, individually on their own. Okay, so वो तो होगा ही। See, बहुत सारे मैचेस में rear guard action will be taken care by KL Rahul and Pandya. Okay, and so उसमें कोई डाउट नहीं है। Okay, even Jadeja. Okay, so उसमें कोई डाउट नहीं है, but I'm just saying that there will be some individual matches which will be won individually by these three people. Gill will take one match on his own, पूरा खत्म करेंगे वो, ठीक है? तो playing a 80 or a 90 or a 100 century मार दिया, so that will all happen. Even Rohit Sharma going on to beat a century. I mean, I'm expecting, अगर हम लोग, of course we'll talk about Pakistan later. So Virat Kohli का special is definitely due. It's definitely due. क्योंकि क्या है ना कि 2011 में विराट कोहली ने he played that very good knock, in the final. Yeah. Okay, so he played a very good knock in the final, which was match winning. Like it was very important. Yeah, 35. Yeah, we always talk about only Dhoni ka 6. Yeah, of course, Gautam Gambhir को उतना credit नहीं मिलता है for putting that 90 odd runs. Okay, लेकिन वो जो विराट कोहली जो आके जो because दोनों दिग्गज चले गए, उसके बाद में he was ensuring that there is no more wickets. Very important phase. उसके बाद में even in 2015. He has played some decent knocks, but it was not as good. Yeah. It was last year. Correct. So last World Cup was all about Rohit Sharma, ना? रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा centuries मारे हैं। तो इस time में I would say that Virat Kohli has got a, क्योंकि उनका Neptune बहुत ज़्यादा powerful हो गया है। So Neptune is extremely powerful. Uranus is very powerful. So even Virat Kohli show, a Virat Kohli show is always on the cards. वो तो होगा ही। In whole of the tournament. In the whole of the tournament, I will say he'll be one of the biggest run getters for India, and a couple of matches he will win on his own. Okay. So the gist of this session is India convincingly सारे matches campaigन में जीतेगा, सिर्फ एक शायद इंग्लैंड वाले में कुछ हिकअप आए, बट दैट इज वो नजर उतारने वाला मैच होगा जो फाइनल सेमीफाइनल में हमारे को प्रॉब्लम को ले जाएगा, पहले उससे पहले ले जाएगा. So that's the gist of this session. Well, again, as I have been saying, बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं लोगों आपसे, फैंस बहुत खुश होने वाले हैं प्रेडिक्शन सुन के, एंड आई जस्ट होप कि जो प्रेडिक्शन है वो ऑन स्पॉट रहे, क्योंकि मैं विराट कोहली फैन भी हूँ. मैं रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए बड़ा मेरे को मजा आता है देखने में. शुभमन गिल अगेन राइजिंग स्टार, और इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना तो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए. That's it. जो वो जो इसमें बिलीव करते हैं ना, सिग्नल्स में बिलीव करते थे, जैसे कि अरे देखो पिछला 3 वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता है वो अपने देश में जीता है, तो इस बार इंडिया जीतने के चांसेस बढ़ गया है. let's have even have faith in that also.
Okay, Yeah. but astrologically definitely it does very good, and we're all seeing that we all like we're peaking at the right time, ऐसा बोलते हैं ना, वो that is also good. Lot of things are falling in place for India, and this is a phenomenality. We just hope that that drought comes to an end now. It's a great chance. Well, thank you so much for joining me in this session, Lobo. It was lovely chatting with you and getting all those good news like one after the other. कहीं Okay. प्रॉब्लम है ही नहीं यार, होने वाला है मजेदार कुछ. आई एम वेरी हैप्पी बॉस. मैं हर बार मैं बैठा रहता तो मेरे फेस पे चेहरे पे स्माइल नहीं हुआ करता था. आई टू ऑलवेज फ्राउन, क्योंकि मैं मुझे बैड न्यूज़ देना पड़ता था ना इंडिया के लिए. ऑलवेज टू फ्राउन, ऑलवेज टू लुक लाइक दैट, यू नो, and seriously talk. But I'm actually seeing myself that I'm smiling a lot. Okay, because I have a lot of happiness to share. I'm the lucky charm for the team. You are, Soumya, you are the lucky charm for, I'm sure, for the team, but definitely for me. Yeah. Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Soumya. मिलेंगे वापस. Yeah. Sure. Yeah. Bye.